ये है failure mode effect analysis. This is a technique which is being used. What are the causes of failure? How the failure can be deal with or can be managed, how the failures can be managed. This is a failure mode effect analysis, and then its main objective is to understand the use of failure mode and to learn steps of developing fmea, summarize different types, and learn how to link fmea. Fmea means failure mode effect analysis. Wherever I am using the word fmea, you have to link it with failure mode effect analysis. fmea means this, okay, in complete presentations. Now, to learn the steps and to develop an FMEA, to summarize the different types of FMEA, to learn how to link the FMEA to other process tools. These are things we are going to learn and from this presentation. Now, benefits. It allows us to identify areas of our process that most impact on our and the most impact on our customer. What is the impact on the customers? That is the benefit of FMEA. Then helps to identify how the process is most likely to fail. Right? And points to process failure that are most difficult to detect. There are certain points and help identify our process in most likely to fail, and points to process failure that are more difficult to detect. These are the benefits. There applications examples are like आपके तीनों जगह applications लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइन में, सॉफ्टवेयर के अंदर. इन तीन जगह इनके applications लगते हैं. Manager is responsible for moving a manufacturing operations to a new facility. He or she wants to be sure the move goes as smoothly as possible and that there are no surprises. A design engineer wants to think of all the possible ways a product being designed could fail, so that robustness can be built into the product. How robust is the product? It depends. Okay. Now, software engineer wants to think of possible problems of a product could fail when scaled up to a large database. This is the core issue for the internet. Okay. Now we have what is the failure mode? A failure mode, the way in which the component, subassembly, product, input, or process could fail to perform its intended function. That is a failure mode. The way in which the component, subassembly, or product, input, or process could fail. What are the chances of failure? What are the causes of failure to perform the intended function? कोई भी चीज अगर फेल हो रही है, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये आपका फेलियर मोड होता है. फेलियर मोड में रिजल्ट ऑफ अपस्ट्रीम ऑपरेशंस और मे कॉज डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस टू फेल. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो भी है वो उनके फेलियर मोड होता है. थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग. आपको ये सब बताता है फेलियर मोड कि कौन कौन सी चीजें गलत हो सकती हैं. जैसे आपने अगर मोबाइल खरीदा या आपने घड़ी खरीदी, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मोबाइल की. सभी के पास मोबाइल है आज की तारीख में. अगर आपने मोबाइल खरीदा तो उसमें फेलियर मोड क्या क्या हो सकता है कि आप उसको लेके बारिश में चले गए, बस खत्म किस्सा. मोबाइल जो है खराब होने का, फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, वो करना बंद कर देगा, वाटर प्रूफिंग उसमें सिस्टम नहीं है. लेकिन ये एक फेलियर मोड में आपको बता रहा हूँ. या मोबाइल को उठाया, बच्चे ने उठा के दूर तेजी से फेंक दिया तो फेलियर मोड हो जाएगा. उसकी एक वर्किंग कंडीशन डिफाइंड है कि इस टेम्परेचर पर वर्क करेगा, सेटिस्फैक्टरी इतने साल तक वर्क करेगा और तो ही काम हो सकता है. या उसके अंदर वायरस आ गया तो वो सॉफ्टवेयर होगा. तो मैंने आपको जो चीजें बताएंगे, क्या क्या बताएंगे. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में बना ही ऐसा है कि उसमें पानी घुस जाए, साइड से कुछ हो जाए। दूसरा डिजाइन इफेक्ट हो गया, डिजाइन ऐसा है कि सब उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये सॉफ्टवेयर उसका सही है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम में आ सकती है। तो एक में एक एग्जांपल आपको दी है मोबाइल, उसके फेलियर मोड क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्किंग कंडीशन में ना वर्क करके कुछ जो उसके हजार्ड है, जो कंडीशन है उसमें ही डिफाइंड कंडीशन में वर्क करना पड़ेगा उसको, तो काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ओके, ना structural approach to identifying the ways in which the product or process can fail, estimating the risk associated with specific causes, prioritizing the actions that should be taken to reduce risk, evaluating design, validation plan or current control plan, डिजाइन वैलिडेशन प्लान और करंट कंट्रोल प्लान, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। The ways in which the product or process fail, estimating the risk associated with a specific cause, prioritizing the action that should be taken to reduce risk. नाउ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, मतलब आपकी एकदम प्लानिंग अप्रोच होती है। एफएमईए कैसे करना है, फेलियर मोड अफेक्ट है, आइडेंटिफाई द वेज इन व्हिच अ प्रोडक्ट और प्रोसेस कैन फेल, एस्टिमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक कॉजेस, prioritizing the action that should be taken to reduce the risk और evaluating design validation design और current control plan। आपको इसके अंदर ये डिफाइन कर देता है कि उसका रिस्क क्या क्या है। जैसे आप प्लेन एरोप्लेन में बैठे हैं और अगर एरोप्लेन क्रैश होगा तो क्या क्या रिस्क आएगा उसका, कौन बियर करेगा, आपके साथ इंश्योरेंस है कि नहीं है, उसमें कितने पैसे आपको उनकी फैमिलीज को देना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, है ना। तो वो पायलट डिसाइड करता है कि उसको कहाँ लैंड करना है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? माइक अनम्यूट किया है किसी ने? Now prioritizing the action that should be taken to reduce the risk, evaluating design validation plan, current control plan. These are the FME analysis, what we can do it. Okay. Now the second one is why FMEA? Methodology that facilitates process improvement, identifies and eliminates concerns early in the development of the process design, improve internal external customer satisfaction, focuses on prevention. आपको फोकस करेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट दैट, then we have maybe a customer requirement likely contractual, FMEA may be required by an applicable quality management system standard, possible ISO. Improve internal and external customer satisfaction, focuses on prevention. FMEA may be a customer requirement, likely contractual. FMEA may be required by an applicable quality management system standard, possibly ISO. So these are quality management system, इनके ISO के अंदर quality management system होता है और अप्लाई कैसे करते हैं, why क्यों कर रहे हैं अपन और quality management system के तहत कर रहे हैं अपन, ठीक है। Now this कब करना चाहिए इसको, when to conduct this FMEA, early in the process improvement investigation, when new system product processes are being designed, when existing design or processes are being changed, when carryover designs are used in new applications, after system product or process functions are defined, but before specific hardware is selected or released to manufacturing.
Carryover designs are used in new applications after system, product, or process functions are defined, but before specific hardware is selected or released to manufacturer. Now, first used in 1960, इसका यूज 1960 में हुआ, फिर नेवी ने यूएस की एयरफोर्स, देन यूएस की नेवी ने यूज किया 1974 में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बोलते हैं 1 by liability cost, so it is so far. ये अब उसका एक ग्राफ रहता है, ये फॉर्म रहता है जो कि मैंने आपको बताया है, फेलियर मोड्स एंड देयर इफेक्ट्स, कॉजेज एंड फेलियर एंड कंट्रोल, प्रायोरिटाइजेशन और डिटरमाइन द एस्पेक्ट. ये नीचे वाला जो है आप लोगों को हाईलाइट करना है इसको. ओके, ये तो इसके टेक्निक्स ये हैं पूरे फॉर्म में. ये तो आप डिटेल पढ़ते आओगे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द की आउटपुट वेरिएबल्स, व्हाट वेज आपको पूरी डिटेल बनानी पड़ेगी. क्या कॉजेज है, सपोज मोबाइल खराब हो रहा है, कौन सी कंपनी के मोबाइल ज़्यादा खराब हो रहे हैं, कौन सी कंपनी के नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करो फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स, कॉजेज ऑफ फेलियर मोड्स एंड कंट्रोल, प्रायोरिटाइज करो, डिटरमाइन एंड access their actions. So these are the things that we consider. Okay. Now types components होते हैं. Types of fmea, design हो गया, process हो गया. Analyze product design before release to production with a focus on plug function. Analyze system and subsystem in early concept and design stages. Process manager used to analyze manufacturing and assembly processes after they are implemented. Now process आता है used to analyze manufacturing and assembly processes after they are implemented. अब इसमें आ जाता है fmea के टीम टूल होता है, टीम वर्क होता है fmea में. टोटल आपके जो आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है या प्रॉब्लम है, टीम अप्रोच necessary team should led by the process owner who is responsible manufacturing engineer or technical person or other similar individual familiar with fmea. The following should be considered for team members: design engineer, operators, process engineer, reliability, material suppliers, customers. Following should be considered for team members. डिजाइन इंजीनियर लगेंगे, प्रोसेस इंजीनियर लगेंगे, मटेरियल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. तो इसके अंदर आ जाएंगे ऑपरेटर्स, रिलायबिलिटी एंड सप्लायर्स. ऑपरेटर्स, रिलायबिलिटी एंड सप्लायर्स की जरूरत होगी ना. अब इसमें इन चीजों का तो यूज हो ही जाता है इनका. देन procedure आप उसका देख लीजिएगा. What are the procedure for each process input? Start with a high value input. Determine the ways in which the input can be wrong. आपको input सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कि किस वजह से हो रहा है. पता लगा किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, राइट हैंड में दर्द हो रहा है, वो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से दवा देगा आपको, है ना. तो इनपुट और जो आपका सर्वे होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. इसके अंदर एक्यूरेट सर्वे इनपुट होगा तो पिएगा. देन फॉर ईच फेलियर मोड you have to determine the effects. Select a severity level for which for each effect. आपको उसकी severity level का पता करना रहेगा कि कितना severe है, how severe it is, and then list current controls for each cause. Select a detection level for each cause.
आपको डिटेक्शन लेवल करना पड़ता है, सेलेक्ट करना है ऑकरेंस लेवल फॉर ईच कॉज। Select severity level for each effect, select an occurrence level for each cause, list current controls for each cause, select a detection level for each cause। तो इतने सारी चीजें इसमें आ जाती हैं इसमें। ओके यस सर। यस सर। अब इसके प्रोसीजर में ये भी होता है कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि उसका रिस्क कितना है। आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो वहां पर रिस्क ज्यादा है कि हवाई जहाज से जाने में रिस्क ज्यादा है, ये आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसका रिस्क प्रायोरिटी नंबर हर चीज का निकालना आता है आपको। रिकमेंडेड एक्शन, assign accessible persons and take actions, give priorities to high risk numbers, high priority number जिसका भी है रिस्क प्रायोरिटी नंबर है ना, तो इस तरीके से निकालते हैं। ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया तो उसका रिस्क कम होगा, और एरोप्लेन से उड़ने में हवा में उड़ रहा है प्लेन, कोई चीज हवा में जा रही है तो रिस्क डेफिनेटली ज्यादा होगा उसका। अगर ढंग से उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, प्लेन का ढंग से फ्यूल नहीं भरा होगा तो क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत बड़े बड़े लोग मरते हैं, है ना। असाइन द predicted severity, occurrence and detection level and compare the risk priority numbers, ये आपको कंपेयर करना होता है। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इसमें आप क्या इनपुट दे रहे हो, एफएमई कर रहे हो, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैट्रिक्स हो गया, प्रोसेस मैप्स आप इनपुट दे रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये जो इनपुट्स दे रहे हो आपको प्रोसेस हिस्ट्री हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, नॉलेज हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, इतने सारी चीजें जो है इसके अंदर लगी हुई है। इनपुट दिया एफएमई सिस्टम को, एफएमई ने क्या निकाल के दिया आपको, आउटपुट क्या मिला आपको, लिस्ट ऑफ एक्शंस, प्रिवेंट कॉजेज एंड और डिटेक्ट फेलियर्स, मोड्स, हिस्ट्री ऑफ एक्शन टेकन, ये चीजें आपको आउटपुट मिल जाएंगी कि आपने क्या क्या एक्शन लिया इसमें और कैसे उसमें अफेक्ट हुआ उसमें, राइट। देन वी हैव दिस severity, occurrence and detection, importance of the effect on customer requirement, इसका severity क्या होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, कितना सिवियर होता है। then occurrence होता है frequency with which a given cause occurs and creates failure mode, obtain from past data is possible। then detection होता है आपका the ability of current control scheme to detect and prevent a given cause may be difficult to estimate। The ability of current control scheme to detect and prevent a given cause may be difficult to estimate early process in operation। Okay, अब इसके अंदर severity और ये आपको जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिए। Remember this word: severity, occurrence and detection. These are the three words. The ability of the current control scheme to detect and prevent a given cause may be difficult to estimate early in a process of process. And then rating scales. There are a wide variety of scoring anchors, both quantitative and quality. And then two types of scales are 1 to 5 or 1 to 10. The 1 to 5 scale makes it easier for the teams to decide on the score, and 1 to 10 scale may allow for better precision in estimates and wide variations in scores. अब इसमें आप देखो रेटिंग स्केल कैसे निकालते हैं अपन। टाइप 2 स्केल 1 से 5 1 से 10 होती है, इन्होंने ये बताया इसमें वाइड वैरायटी स्कोरिंग एंकर्स हो गए। स्केल्स 1 से 5 1 से 10 टाइप की स्केल होती है। 1 से 5 स्केल में इजियर होती है, इजियर टर्म टीम्स यूज करते हैं, और 1 से 10 में थोड़ी अच्छी प्रिसाइज टीम यूज करते हैं इसके अंदर। अब सिवियरिटी में नॉट सिवियर है, 10 जो है वेरी सिवियर, ऑकरेंस 1 जो है नॉट लाइकली है, वेरी लाइकली ऑकरेंस होने के चांसेस हैं कि भाई बारिश होनी है, अब आप मोबाइल लेके जा रहे हो तो एक चांसेस है कि नमी आ जाएगी इसके अंदर, या सीमेंट की बोरी आप लेके जा रहे हो भाई साहब,
अब बारिश में लेके जा रहे हो तो नमी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप चाहोगे कि उसको जल्दी से जल्दी यूज करना है। देन डिटेक्शन हो गया आपका, इजी टू डिटेक्ट एंड नॉट इजी टू डिटेक्ट, ठीक है। आप इसके अंदर रिस्क प्रायोरिटी नंबर का तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिवियरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्शन, यू विल गेट रिस्क प्रायोरिटी नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्रीन प्रायोरिटी नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, a product of severity, occurrence and detection of scores. और ये इसकी समरी हो गई, बस इतना है इसके अंदर। Identify the ways in which product or process can fail, estimate the risk associated with specific causes, prioritize the action that should be taken to reduce the risk. FMEA is a team tool. There are two different types of FMEA, design and process, input FMEA. These are all summary of all what we have taught today. Okay, everyone, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है, सो रहे हैं सब? नो सर। नो सर। नो सर।